everyone. Now, this is a great time to start with the performing of, an audit. So we have already had a good discussion about, what is an audit and how auditors get into the plan, how do they decide that they want to be the auditors of the company, and then after that, how they're planning with the audit. Now, this is the next crucial step which comes up as, how to perform an audit. कैसे करना है ये performing वाला audit वाला step कैसे करना है? When they're really working on it, right? अभी plan हो गया. Now this is the real execution of the work, that's performing an audit, right? जब वो perform करते हैं audit, so how do they do that? So there's a tag that's going on, audit in progress. So what they're really doing is something that you need to understand. अब यहाँ पर auditor को, auditor is supposed to obtain sufficient and appropriate audit evidences in order to give a conclusion, that's an opinion at the end in the auditor report. That कौन सा opinion देंगे we'll discuss, but they will be giving an opinion. Financial statements present true and fair view, financial statements present कर रहे हैं true and fair view के नहीं, financial statements in all material respects have been prepared in accordance with applicable FRF. ठीक है, financial statements जो हैं are free from fraud and error. So that's what they have to give an opinion about it, right? So auditor जब audit करते हैं, while they are auditing, they do everything, right? So उसके बाद auditor क्या करते हैं इसके अंदर? So let's have a look over it. So that's what we will discuss. Okay, so auditors, are putting on their scrutiny glasses and they're doing everything, right? अब auditor को sufficient and appropriate audit evidences ढूंढना, auditor literally, I always say that, auditor साम दाम दंड भेद से काम करते हैं. They try everything possible to make it a point, वो हर प्रकार से, they will be able to, be working on it, and they will be, वो उस पे work करेंगे, and they will also make it a point कि they, they are at the point of, giving the conclusion or the opinion at the end, right? So auditor will be going for every possible way, right? That includes inspection, right? Calculations, recalculations, recomputations, analytical procedures, observations, reperformances, inquiries, external confirmation. So they're doing everything. So when the audit is in progress, you will see that there's the female who is basically scrutinizing the financial statements of the company. You see a man who is on the computer and is trying to look for the records. This is called as physical inspection. This is called as inquiry, because this is a person from management and we are auditors of the company. So auditor is basically inquiring from the management of the company. So auditor is trying every way possible to make it a point कि साम दाम दंड भेद से basically हमें opinion draft करने के लिए sufficient and appropriate audit evidences मिल जाए. Right. So you have to understand कि auditor कैसे करते हैं audit को. Auditor जब भी audit को start करते हैं, they are, when they're performing the audit, they are doing everything possible, right? So it includes inspection for physical assets, inspection of every, possible document, recalculations, recomputations, reperformances. A lot many times, जैसे कि depreciation को recalculate करना, कोई काम किया तो उसको reperform करना, inventory counts को क्यों physically attend करना. Inquiry, inspection, which includes, external confirmations, which includes positive confirmation, negative confirmation. तो हर possible तरीके से auditor जो है वो ढूंढ के लाते हैं, audit evidences, so that they can give an opinion at the end, right? Auditor report के अंदर वो opinion draft करने की position पे आ जाने चाहिए, right? So now you have to understand, whenever the auditor is standing on this, on this ladder, and they're looking for the balance sheet, right? They are always looking from the overall perspective. अब इसका देखो, for example, you might see, $100 की गलती, you might consider it as a small mistake, right? But $100 की 1000 mistakes, तो आप इसको क्या बोलोगे? What is this? This is right. So ये कितने की mistake बन गई? So this is $100,000 की mistake. So now this is not immaterial. So you are always looking from the overall view, right? So overall view से आप देखते हो कि whether the matter is material or whether the matter is not material. उसके बाद auditor is putting on the scrutiny glasses. They are doing everything impossible.
अब उसके बाद once they have performed the audit, they are completely having a discussion with the management of the company as well. And whenever required, they're also having a discussion with the TCWG, that is those charged with governance. So you have to understand the prime difference between it. Management क्या होती है? The ones who are managing the company, managing the company, regular affairs of the company को जो manage करते हैं. But वो तो directors of the company, directors वो होते हैं, sorry, वो are the TCWG. So TCWG होती है दो top level of the TCWG is those charged with governance for the top level management. The ones which are not involved with the daily affairs of the company, the ones which are involved with the executive affairs of the company, the executive performance of the company. So जो उसके साथ responsible होते हैं, तो matters उनके साथ discuss किया जाता है. So you can clearly see that the auditor is having a discussion with the director of the company. तो इसी तरीके से हम अपने sessions में भी पढ़ाते हैं बहुत सारे detail के अंदर. तो यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के साथ डिस्कस हो रहा है. यहाँ पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्राफ के बारे में डिस्कस हो रहा है. एंड दे विल आल्सो बी डिस्कसिंग इट कि हमने ये स्टेटमेंट्स देखी है, वी थिंक दैट इट इज एन एरर, इट्स अ फ्रॉड, यू नीड टू रेक्टिफाई. और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं फ्रॉड के रिलेटेड एंड एरर के रिलेटेड. तो ऑडिटर उसको बोलते हैं कि ठीक कर दो, राइट. So उसके बाद क्या होता है? Then material misstatement, wow, the financial statements is so wrong. And by the time auditor is basically doing everything possible, the auditor is also maintaining the working papers of the company, because it's very important for them to maintain working papers of the company. क्योंकि कल को अगर उन पे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया था, तो ऑडिटर विल बी एबल टू answer to that particular question. That auditor will be able to suffice for their working papers, and they will be able to produce the working papers, and they will be able to say that we literally plan the audit, so everything is jotted down in the working paper. So they plan an audit, they put it in the working paper. They are performing the audit, whatever they're doing, they are putting it in the working paper, so that anyone in the future questions them that they have done the audit diligently or not, they will be able to suffice the purpose, and they will be able to give an answer. Along with that, for a lot of other reasons also, working papers are being prepared. For example, हमने future में किसी की training करनी है, I need to tell my juniors that how the audit is being performed for the future reference as well. And along with that, if I'm auditing this company again, for example, this is my recurring audit and I do it every year, so I need to have working papers to basically see कि हाँ चलो future past working papers को भी आप prefer करते हो in the future as well, right? So that's the basic purpose of the working papers. So that's what you need to understand right now, right? तो वर्किंग पेपर्स भी उसी साथ बनाते रहते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट ऑडिटर्स आल्सो मेक इट अ पॉइंट कि ऑडिटर हमेशा हाई क्वालिटी का हो, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन दैट इज बीइंग दैट हैज बीन एवर पुट अप ऑन इन फ्रंट ऑफ देम. बट फिर भी अगर पीयर रिव्यू वगैरह कुछ भी होता है, तो उसके अंदर दे विल बी एबल टू सफाइस विद दैट वर्किंग पेपर. अब ऑडिटर क्या होता है? अब कंप्लीशन एंड रिव्यू का स्टेज आता है. सो कंप्लीशन एंड रिव्यू के अंदर ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर बेसिकली इसके अंदर इन द कंप्लीशन एंड रिव्यू स्टेज वो कंप्लीट करते हैं इस ऑडिट को, वो देखते हैं कि सब कुछ किया था कि नहीं. एंड उसके बाद वो अगर कुछ भी और दोबारा देखने की जरूरत है, कहीं पे भी जजमेंट्स और दोबारा चेक करने की जरूरत है, कहीं पे और एडिशनल काम करने की जरूरत है, सो वहां पर ऑडिटर्स रियली हैव अ लुक ओवर इट. एंड ऑडिटर्स बेसिकली अपना काम जो है वो वहां पे फिनिश करते हैं, राइट. तो उसके बाद ऑडिटर क्या करेंगे? ऑडिटर एक ऑडिटर रिपोर्ट जो है इशू करते हैं टू द एड्रेसिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. बट नाउ देयर इज वन डिस्कशन दैट वी नीड टू मेक. बाकी सब तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, परफॉर्मिंग में बहुत डिस्कशन है, बट वी आर जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ लाइक विद अ क्विक डिस्कशन ऑफ इट, राइट. तो हम सेशंस के अंदर लॉन्ग डिस्कशंस करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप ये समझो कि व्हेन ऑडिटर इशूइंग द ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, दे कैन इशू 4 ओपिनियन इन देयर, राइट. सो ऑडिटर के पास 4 ओपिनियन की चॉइसेस होती है, एंड ऑडिटर कैन पिक अप एनी ओपिनियन ऑफ द चॉइस डिपेंडिंग अपॉन जो उनको मिला है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट. जैसे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले एंड ऑडिटर हैज बीन एबल टू कंक्लूड, दे विल बी इशूइंग 1 ओपिनियन आउट ऑफ द 4 दैट हैव बीन गिवन टू देम. सो आउट ऑफ 4 वो 4 में से एक ओपिनियन इशू करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव इज, सो पहला कहते हैं हम उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है. पहला है अनक्वालिफाइड ओपिनियन. सेकेंड वन वी कॉल इट एज क्वालिफाइड ओपिनियन. The third one is called as adverse opinion. And the fourth one is called as disclaimer of opinion. What is unqualified opinion? Unqualified है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, अनक्वालिफाइड का मतलब है सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस बने थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दैट इज कंट्री पे लागू होने वाला फ्रेमवर्क। सो हमारे लिए it's always going to be international financial reporting standards. So what do we presented? That financial statements have been prepared in accordance with applicable FRF, that's as per IFRS. So उसके बाद financial statements are free from fraud and error. तो उसके बाद हम आप बोलते हैं free from fraud and error, ठीक है? So financial statement, all material specs have been prepared in accordance with applicable for applicable FRF. The financial statements are free from the fraud and error in all material respect, that is free from the fraud and error. So ये होता unqualified opinion, कोई चक्कर नहीं है, and there is no point that you want to highlight, ठीक है? What is qualified opinion? Qualified opinion बिल्कुल same है, हम बोलते हैं financial statements present true and fair. Financial statements in all material respects have been prepared in accordance with applicable for FRF. That is International Financial Reporting Standard. Financial statements in all material respects is free from fraud and error. Very good. ये free from fraud and error भी हो गया, right? But आप बोलोगे कि मैम what is the point of difference then in qualified and unqualified opinion? There's a lot of difference. So now let's have a quick discussion about it. तो अनक्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू माइट बी सीइंग दैट दे आर एब्सोल्युटली द सेम। अनक्वालिफाइड में भी हम यही बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि आईएफआरएस के तहत बने, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। बट यहाँ पर हम बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर, ठीक, यहाँ पे एक चीज जो हम ऐड करते हैं एक्सेप्ट, मतलब सब कुछ ठीक है, बस ये चीज नहीं हमें ठीक लगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चीज में हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिली, या इसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट की, बट ये सिर्फ आइसोलेटेड से पार्ट में। एग्जांपल सिर्फ रिसीवेबल्स, हमें रिसीवेबल्स में गड़बड़ लगी, हमें लगता है कि रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड है, और ये ये materially overstated है, right? The balance is materially overstated, right? Or we can say, payables हमें ऐसे लगे, हमें inventories ऐसी लगी. So we will only be isolating one thing and, one or two things. हम इसको isolate करके बोलते हैं provisions हमें अच्छी, हमें provisions में गड़बड़ लगी, हमें inventory में गड़बड़ लगी. But बाकी सब कुछ ठीक है. So what we are, what is the point of difference in unqualified opinion? सब कुछ ठीक है. Qualified में सब कुछ ठीक है, except for one or two or three isolated things जो हमें उसमें जिनमें गड़बड़ दिखी। एडवर्स ओपिनियन में हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस नहीं बनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। मतलब हम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है। So that is what adverse opinion. What is disclaimer of opinion? Disclaimer of opinion is an opinion that is issued and in last resort auditor के पास। Auditor कहते हैं कि हमें इतने sufficient and appropriate audit evidences ही नहीं मिले, that we didn't get support from the management, और या हमें किसी भी वजह से हमें इतने opinion ही नहीं मिले कि हम अपना कोई opinion draft कर पाए। मतलब overall financial statements के ऊपर अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ओपिनियन नहीं मिला, फॉर एग्जांपल आपके रिसीवेबल्स के डॉक्यूमेंट जल गए, और दैट पर्टिकुलर रीजन आपको रिसीवेबल्स के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि मुझे रिसीवेबल्स के ऊपर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले, तो हम रिसीवेबल के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कर सकते हैं। सो वी विल बी इशूइंग क्वालिफाइड ओपिनियन। दैट मींस क्वालिफाइड ओपिनियन इज इशूड अगर कुछ भी आइसोलेशन में ठीक नहीं है, जैसे उसके ऊपर आपको मटेरियल, अगर आपको उसके ऊपर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते, तब भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे। बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो इशू करोगे। So by the end, what you need to understand is when the auditor has started to plan the audit, then perform the audit, then completion review, then by the end, एक जो फाइनल चीज जो डॉक्यूमेंट एड्रेसिंग होता है टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो आपने इतने महीनों की मेहनत की होती है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट इज गिवन इनटू द auditor report, and that is issued to the
auditor, that is issued to the shareholder of the company, and in which you will be issuing your auditor opinion. And out of these 4 opinion, you will be issuing 1 opinion. Now, in next sessions, we will be practicing some of the questions as well, so you get to know the zest of it. And along with that, do not forget to share, like, share, and subscribe our channel, because you get to know, you get an access of a lot of free content. And along with that, do not, forget to download our app as well, because you get a lot of free content over there as well. So stay tuned with our session so that, you get a lot of access to the free content as well. I will be seeing you now in the next session, guys. Bye-bye. Take care, everyone.